Hello students, in this video we are going to do the climax scene of the play that is also known as the court scene, Act 4, Scene 1. So here let's quickly begin with the explanation of the text. The scene takes place in Venice in a court of law where Duke is present along with Antonio, Bassanio, Graciano, Lorenzo, and later in the scene we do see Portia as well as Nerissa, and obviously we have the villain Shylock over here. The scene begins with Duke's speech. He asks, "Where is Antonio?" And Antonio says, "I am here, my lord." And Duke says, "I'm sorry for you because you have got in a conflict against a very stone-hearted opposition." Stony adversary means a very strong-hearted opponent, and an inhuman wreck, incapable of pity. The person who is a very wreck and is not at all capable of showing any pity. He doesn't have a small drop of mercy in his heart. Antonio says, "Yes, my lord, I know that you have been very gracious towards me, and you have even taken pains to go to Shylock and try to convince him that he should take some heed and some important notice of the losses that I had, and you went over there out of the way कि आप मेरे लिए बात करो उससे कि वो अपना decision change कर ले, but I am sorry कि वो नहीं माना है, and you did it for me. I am so grateful to you for this. I do oppose my patience to his fury, and I am armed to suffer with a quietness of spirit." He says, "Now I have understood everything. Why is he doing so? And I am ready for whatever the thing he wants to do." The very tyranny and rage of his, that means उसकी जो गुस्सा है, उसका जो नफरत है, मैं उसको झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ. So after this, Duke says, "Go one and call the Jew into the court." And उसी समय Salarino उसको बताता है, when Duke calls for Shylock, he says कि here he comes at the door. And this time Duke, we see that Shylock enters the court, and here Duke gives a longer speech to explain the situation to Shylock once again and expecting a positive response from him. He says, "Make room and let him stand before our face. Shylock, the whole world thinks, and I think so too, that thou but leadest this fashion of thy malice to the last hour of act." Shylock, मुझे भी और पूरी दुनिया को, सबको ये लगता है कि ये जो तुम अपनी नफरत दिखा रहे हो, ये सिर्फ आखिरी मोमेंट तक दिखाओगे, and then 'tis thought thou shalt show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty. और तब उसके बाद तुम लास्ट मोमेंट पे चेंज होके इस क्रूअल्टी की जगह अपनी थोड़ी सी मर्सी दिखा के हमको और ज्यादा हैरान परेशान कर दोगे, चौंका दोगे, बिकॉज seeing mercy from you would be even more stranger than the cruelty you are showing at the moment. But we are expecting कि तुम शायद एंड में आके थोड़ी सी मर्सी दिखा दोगे. And where thou now exactest the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, but touched with human gentleness and love, for a mighty of the principle, glancing an eye of the pity on his losses that have so late so huddled on his back, enow to press a royal merchant down, and pluck commiseration of his estate from brassy bosoms and rough hearts of flints, from stubborn Turks and Tartars never trained to the office of this tender courtesy. We all expect a gentle answer due. So here king says कि तुम अभी इस पे थोड़ा सा वो दिखाओगे, तरस कर खाओगे और थोड़ा सा अपनी पिटी दिखाओगे इस पे, क्योंकि अगर तुम इससे अपना फॉरफीचर लेते हो, पेनल्टी लेते हो, विच इज अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, तो तुम फॉरफीचर का जो 3000 डकेट्स है उसका डबल अमाउंट जो भी तुम्हें दिया जा रहा है वो तो लूज करोगे ही करोगे, साथ ही साथ हमारे अंदर की जो एक ह्यूमन फीलिंग होती है वो भी लूज कर दोगे, बिकॉज वी आर सपोज टू शो द ह्यूमन फीलिंग्स एंड मर्सी एंड पिटी टू अदर्स, एंड स्पेशली थिंकिंग अबाउट दिस मर्चेंट जिसके इतने लॉसेस अभी अभी हुए हैं कि एक अच्छे खासे मर्चेंट को भी वो उसकी बुरी कंडीशन में डाल सकते हैं. सो आई गेस यू वुड अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन एंड शो सम कमिसरेशन मीन्स show some particular pity towards him. You might have some sympathy, empathy towards him, his losses, and you will understand his situation, and in doing that you might show some courteous respect and some pity on him, because these are the things जो हमें brassy bosoms को हमारे को Turks and Tartars, that means the wild and they considered it as wild Asians tribes, उनसे हमारे को यही एक चीजें हैं जो हमको थोड़ा बेहतर बनाती हैं या civilized बनाती है, because they are never trained with the offices of or with the qualities of
courtesy and mercy. They are barbarians, they are savage, they are wild, brutal, और वो किसी के लिए प्यार मोहब्बत mercy नहीं रखते हैं. But we do that because we have been trained in that way to show courtesy and mercy to others. और यही दिखा के हम उनसे अलग हो सकते हैं. And that is why we expect you to show a better answer, a better response. Shylock, in answer to this, says, I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit my bond. Here he says, I know I have understood what you want to tell me, what you want to ask from me. मुझे उस बारे में पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता because मेरा holy Sabbath, the 7th day, मैंने उसके नाम से कसम खाई है कि मैं अगर bond का forfeiture होगा तो I am only going to take the penalty, nothing else. If you deny me, let the danger light upon the charter and your city's freedom. अगर तुम मुझे मना करोगे, मैं क्योंकि फॉरेनर हूँ और मेरे को फॉरेनर को प्रॉपर राइट्स नहीं लेने दोगे, तो खतरा तुम्हारे चार्टर पे, तुम्हारी फ्रीडम पे आना चाहिए. तुम्हारे से मतलब है द स्टेट ऑफ वेनिस, कि यहाँ पर ये रेपुटेशन आ जाएगी कि ये बाहर वालों को प्रॉपर न्याय नहीं देते हैं. You'll ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. I will not answer that, but say, it is my humor, is it answered? Now he is saying कि आप मुझसे पूछोगे कि मैं इस आदमी से फ्लैश क्यों ले रहा हूँ. इसका एक 1 pound ऑफ कैरियन फ्लैश मीन्स रॉटन फ्लैश, जो कि मेरे किसी काम का नहीं होगा, रादर देन टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँ कि आई डोंट वांट टू आंसर दैट, इट इज जस्ट माई विश, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, और ये मेरा आंसर होगा दैट आई विल बी गिविंग टू यू. What if my house be troubled with a rat, and I be pleased to give 10,000 ducats to have it banned? What? Are you answered yet? Now he says कि अगर मेरे घर में एक बहुत बड़ा डेंजर चूहों का होगा और मुझे उनसे छुटकारा पाने के लिए 10,000 ducats भी देना पड़ेगा, तो I'll be happy to give it. Will you question me then? No. And that is why I am not answerable to you in that particular way. So over here also उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे भी answerable नहीं हूँ. I am not going to answer you for that. So are you answered? क्या आपको मिल गया आपका आंसर? Some men there are love not a gaping pig, some that are mad if they behold a cat, and others when the bagpipe sings in the nose cannot contain themselves. For affection, mistress of passion, sways it to the mood of what it likes or loathes. Now here he says कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गेपिंग पिग सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है. They cannot see that particular sight. Usually at that time feasts में there used to be a delicacy right in the center of the table. An entire roasted pig would be set up over there, and the mouth of that pig would be open, and over there it would be stuffed with an apple. तो वो सेंटर टेबल में फीस्ट की टेबल पे सेंटर में होगा. सो ही सेइंग कि कई लोगों को वो देखना अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोग ऐसे होंगे who are allergic to cats, while there are others who are not able to withstand the sound of a bagpiper. तो ये सारी चीजें जो अपने आप में खराब नहीं है. It is only our likes and dislikes which makes it as something that is taken pleasantly or something that is taken as a load, taken as a burden. Now for your answer. As there is no firm reason to be rendered why he cannot abide a gaping pig, why he a harmless necessary cat, why he a woolen bagpipe, but of force much yield to such inevitable shame as to offend himself being offended. So can I give no reason, nor I will not. So वो कह रहे हैं जैसे कि आपके आंसर के लिए बोला जाए कि कोई इंसान ये नहीं बता सकता है कि why he doesn't like the gaping pig, or why is he not able to withstand a necessary cat or a harmless cat, and why some people are not able to withstand the sound of a bagpiper. It is just that they are swayed by their mood, by their likes and dislikes, and that is why they are offended by these particular things. Similarly, I am also not going to give you any reason why I am doing this. It's just that I have a particular dislike and I cannot withstand him, and that is the reason why I want him to be out. Next he says, more than a lodged hate and a certain loathing I bear Antonio, that I follow thus a losing suit against him. Are you answered? और सबसे मेन चीज वो ये बता रहा है शायलॉक कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ because I have a proper hatred towards Antonio, a long grudge, a long lasting hatred, and वो तभी खत्म होगी जब मैं उसको अपने रास्ते से पूरा हटा दूंगा. This is what he means. So he says कि इसीलिए मैं ये losing suit लेने को भी तैयार हूँ. Why is he calling it a losing suit? उसका तो फायदा हो रहा है, but अभी at present people would see कि उसने उतने ढेर सारे thousands of ducats को छोड़कर he has taken a pound of flesh which is of no value for him. So that is
why according to the general scenario it is a losing suit कि उसको pound of flesh लिया जो किसी काम का नहीं है, and he says I am ready to take that also because in doing so I will be getting rid of Antonio. The main reason is वो हट जाएगा तो फिर वो जितना भी चाहे प्रॉफिट कमा सकता है later onwards. Bassanio says, "This is no answer, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty." वो कह रहा है ये कोई आंसर नहीं हुआ कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ एंड क्योंकि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ. This is just your cruelty that you are showing, and that is why you don't have any reason for your showing your cruelty. But Shylock says, I am not bound to please thee with my answers. मैं इसलिए मेरे को ये फोर्स नहीं है कि मैं तुम्हारे को अपने आंसर्स से प्लीज करूं या तुम्हारे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स से प्रोवाइड करूं सब चीजें. Bassanio says, do all men kill the things they do not love? क्या हर कोई उस चीज को खत्म कर देता है तो डिस्ट्रॉय कर देता है जिसको वो पसंद नहीं करता है? Shylock says, hate any man the thing he would not kill. यदि कोई इंसान सब चीजों में से किसी एक चीज से हेट करता है, so won't he destroy that particular thing? Won't he get rid of that particular thing? Bassanio says, every offense is not a hate at first. हर बार कोई अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो हेट्रेड नहीं बन जाती है. Shylock says, what? Wouldst thou have a serpent sting thee twice? वो उसके उसी एक बार के नफरत के एक बार के इंसिडेंट पे ही कमेंट करते हुए बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सांप आपको एक बार काट दे तो आप बोलो ओ इट इज नॉट हेट्रेड, और आप उसको बोलो अगली बार जब दोबारा काटेगा देन आई एम गोइंग टू हैव हेट्रेड टुवर्ड्स दिस स्नेक. I won't let any snake get a second chance to bite me, and that is the reason I want to get rid of Antonio. अब यहाँ पर यही एक वर्बल फाइट हो रही है एंटोनियो और बेसानियो और शाइलॉक की. एट दिस टाइम एंटोनियो इंटरवीन्स, वो बीच में बोलते हैं आके, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द Jew. You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. वो कह रहा है बसानियों को समझाते हुए, ध्यान रखो तुम किससे बात कर रहे हो, किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, इस शाइलॉक को. इससे अच्छा तुम बीच पर जाओ और जो हाई टाइड आ रही है, वेव्स आ रही है, उनसे क्वेश्चन कर लो, उनसे रीजन कर लो कि वो इतनी हाई क्यों हो रही है और क्यों इनको नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए. वो एक बार को तुम्हारी बात शायद सुन लेंगी. You may as well use question with the wolf, why he hath made an ewe bleed for the lamb. तुम एक बार एक वुल्फ से भी जाके क्वेश्चन कर सकते हो, उससे रीजनिंग आंसरिंग या क्वेश्चंस कर सकते हो कि क्यों उसने एक यंग लैम्ब को खा लिया एंड मेड द मदर शीप क्राई फॉर दैट लैम्ब, और वो शायद इस बारे में तुम्हारे को कुछ रिस्पॉन्स दे दे, तुम्हारी बात सुन ले, मान ले. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven. जब पाइन ट्रीज पे, पहाड़ों में या पाइन ट्रीज पे तेज हवा चलती है तो वो हवा के साथ स्वे करते हुए दे मेक सर्टेन साउंड, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू माइट इवन गो एंड आंसर क्वेश्चन देम व्हाई दे आर मेकिंग सच साउंड्स, व्हाई दे आर स्वेइंग इट, व्हाई दे आर मूविंग लाइक दैट, ऑल दोज थिंग्स. एंड यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड. ही सेइंग कि तुम कुछ भी जो बहुत इम्पॉसिबल, बहुत हार्ड लग रहा है, कुछ भी काम कर सकते हो. बट as seek to soften that, than which what's harder his Jewish heart. तो उनका हार्ट सॉफ्ट करने के लिए किसी से भी हार्डेस्ट से हार्डेस्ट चीज के पास जाके क्वेश्चन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द हार्ट ऑफ दिस Jew who is standing over here. इसका दिल पिघलाना एक सबसे मुश्किल काम है, इससे रीजन करना एक सबसे ही कठिन काम है. Therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all brief and plain conveniency, let me have judgment and the Jew his will. इसलिए एंटोनियो कहता है अब और ज्यादा उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक एनी मोर ऑफर्स. जो भी वो करना चाहता है जल्दी से करे, और जो कन्वीनियंटली जस्टिस या जजमेंट किया जा सकता है लेट इट बी डन सो, बिकॉज आई वॉन्ट प्रॉपर जजमेंट टू बी डन. लेट हिम हैव हिज जजमेंट एंड हिज विल वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू, बिकॉज एंटोनियो डज नॉट वॉन्ट टू ड्रैग दिस मैटर एनी फर्दर. Bassanio says, for that 3,000 ducats, here is 6. मैं तुम्हें डबल देने को तैयार हूं. तो शाइलॉक रिस्पॉन्ड करता है, if every ducat in 6,000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them. अगर तुम्हारे 6,000 ducats में हर एक ducat भी अपने आप में 6 times होता, यानी 6 ducats होता, तो भी मैं नहीं लेता. यानी कि 3,000 into 6 equals to 18,000 ducats. I would have not taken it. Even no, sorry, it is 6,000. 6,000 ducats into 6 parts basically is 36,000 ducats होते, तो भी मैं ये सब नहीं लेता. I would have had my bond. तब भी मैं अपनी बॉन्ड को ही चूज करूंगा. That is the penalty. Duke says, how shalt thou hope for mercy rendering then?
अगर तुम्हारे को तुम लोगों को मर्सी नहीं करोगे, उन पे तरस नहीं खाओगे, उनको पिटी शो नहीं करोगे, how are you going to expect mercy from God? Because on the last judgment day when God will come, he will check all our sins, vices, veins, everything, and then he will make his judgment accordingly. And if it is not accompanied with mercy and pity, then all of us are going to be doomed. So in that case, it is very important that we should be in the practice of showing mercy to others, and only then we can expect mercy from God. Shylock says, what judgment shall I dread, doing no wrong? You have among you many a purchased slave, which, like your asses and your dogs and mules, you use in abject and in slavish paths, because you bought them. वो कह रहा है मैं किस बात से डरूं, किस न्याय से डरूं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम भी तो हमारी तरह मेरी तरह कितने सारे काम करते हो, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ इतने सारे लोग हैं जो इतने स्लेव्स रखते हैं, एंड देन दे मेक देयर स्लेव्स वर्क फॉर देम लाइक donkeys and dogs, they treat them like dogs, like mules, they work for them, and it is they do all the degrading works, they are kept in a very degrading manner because they are slaves. Shall I say to you, let them be free, marry them to your heirs? Why sweat they under burdens? Let their bed be made as soft as yours, and let their palates be seasoned with such viands. You will answer, the slaves are ours. So do I answer you. वो कह रहा है अगर आपसे मैं ये बोलूँ उन लोगों से जो स्लेव्स रखते हैं कि यू कैन जस्ट सेट द स्लेव्स फ्री, उनको खाली फ्री छोड़ दो, या उनको अपने बच्चों से, अपनी बेटी या अपने बेटों से उनकी शादियां करवा दो, लेट देम बी योर डॉटर इन लॉज और सन इन लॉज, एंड डोंट बर्डन देम एंड गिव देम द बेड्स एज सॉफ्ट एज योर ओन बेड्स, उनको वही खाना दो जो आप देते हो, लेट देयर पैलेट्स बी सीजन विद द सेम टेस्ट्स, जो टेस्ट आपको मिलता है खाने का. यू विल से कि वो तो हमारे स्लेव्स हैं एंड वी हैव बॉट देम, तो हम उनके संग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. और वो कह रहा है शायलॉक, मैं भी आपको इसी तरीके से आंसर देता हूँ. द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज डियरली बॉट. जो पाउंड ऑफ फ्लैश की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक तरह से स्लेव की तरह मैंने खरीदा है. आई हैव डियरली बॉट मीन्स मैंने उसको बहुत अच्छे से लीगली लिया है, वो मेरा है. इट इज माइन एंड आई विल हैव इट, और इसलिए क्योंकि वो मेरा है तो वो तो मैं लूंगा. मैं और उसकी बॉडी पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो लीगली मैंने लिया है, खरीदा एक तरह से. If you deny me, fie upon your law. There is no force in the decrees of Venice. I stand for judgment. Answer, shall I have it? वो कह रहा है अगर तुम मुझे ये नहीं लेने दोगे तो then it is a shame upon your justice on the judgment of Venice. And because there is no particular judgment in the entire Venice which can stop me from taking this particular deal, this particular penalty. And so I am standing here for judgment. Quickly answer me, how and when shall I have it? Duke says, upon my power I may dismiss this court unless Bellario, a learned doctor whom I have sent for to determine this, come here today. वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा से अपने पावर को इस्तेमाल करके इस केस को यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बाहर से एक स्पेशल लॉयर को बुलाया हुआ है, डॉक्टर ऑफ लॉ मीन्स अ लॉयर, एंड दैट इज डॉक्टर Bellario, who is supposed to come here right now today. So I am just waiting for him to come and then we will proceed with the case with any other further proceedings. Salario says, my lord, here stays without a messenger. Without, here stays without means कहीं बाहर खड़ा है एक, वो आपका वेट कर रहा है. A messenger with letter from Dr. Bellario and new come from Padua. ये जो messenger है जो बाहर खड़ा हुआ है, ये अभी new come means अभी आया है, and he has come from the doctor because he has come from Padua. Duke says, Duke says, bring us the letter. कॉल द मैसेंजर. ये जो ड्यूक मैसेंजर अभी आया बाहर खड़ा हुआ है उसको अंदर बुलाओ, और वो जो भी मैसेज या लेटर लाया है जल्दी से लाकर हमको दो. गिव इट टू मी एंड वी विल रीड इट. बसानियो मीनवाइल इज टॉकिंग टू एंटोनियो. जितनी देर में ड्यूक लेटर लेता है, पढ़ता है, उतनी देर में बसानियो एंटोनियो से बात करते हुए बोलता है, गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन, करेज येट. द Jew shall have my flesh, blood, bones and all, or thou shalt lose for me 1 drop of blood. Antonio, cheer up, don't worry. थोड़ा सा और करेज दिखाओ. ये जो शाइलॉक है, द ज्यू, उसको मैं अपना फ्लैश, बोन, बॉडी सब कुछ दे दूंगा, इससे पहले कि तुम्हारा एक भी तुम्हें खरोंच आए, तुम्हारे एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड बाहर गिरे, तुम मेरे लिए उसको यूज करो. मैं अपनी सारी की सारी ब्लड, बोन सब कुछ दे दूंगा तुम्हारे को बचाने के लिए. एंटोनियो सेज, आई एम अ टेंटेड वेटर of the flock.
Now here he is saying कि I am the diseased sheep, और diseased ram से मतलब है diseased ram, diseased sheep of the entire flock, पूरे sheep के flock में से मैं ही एक हूँ जो कि खराब हूँ, जिसकी जो सही नहीं है, appropriate नहीं हुए, meetest for death, और जो सबसे सही नहीं होता उसी को मर जाना चाहिए. So that is why he is saying I am the most appropriate one in the entire group who should die. The weakest kind of fruit drops earliest to the ground. जो सबसे कमजोर फल होता है, जो सही नहीं होता है, वही सबसे पहले जमीन पे गिर जाता है. And so let me, you cannot better be employed, Bassanio, than to live still and write mine epitaph. वो कह रहे तुम्हारे लिए, इसलिए मुझे मरने दो बसानियो, तुम्हारे लिए इससे अच्छा और कोई काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती कि मेरे मरने के बाद यू शुड बी द वन हु विल राइट अ पर्टिकुलर, हु विल गेट अ पर्टिकुलर एपिटाफ ऑन माई ग्रेव, ऑन माई टूम्बस्टोन. मेरे ग्रेव के ऊपर जो पत्थर होगा उसमें क्या लिखा जाएगा वो तुम डिसाइड करके तुम लिखवाओगे या तुम लिखो. At this time, Nerissa enters the scene on the stage and she is disguised as a lawyer's clerk, as a man. Duke says, came you from Padua, from Bellario? Nerissa says, yes, my lord. दोनों ही बातें सही हैं, and I have brought greetings to you. And then she gives a letter to the Duke. Bassanio is talking to Shylock at this time, क्योंकि Duke अब letter पढ़ेगा. So Bassanio says, why dost thou wet thy knife so earnestly? तुम वो wet जो है, stone जो है, stone पे अपनी knife को ऐसे धार क्यों लगा रहे हो, तेज क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी? अभी तो कोई भी decision नहीं लिया गया है. Because Shylock has taken out his stone which is known as soul, और उस soul पे वो अपनी knife को साफ कर रहा है ताकि उसकी धार तेज हो जाए, so that he might sharpen it properly. Shylock says, to cut the forfeiture from that bankrupt. वो कह रहा है क्यों कर रहे हो, तो वो बड़े प्लेनली बोल रहा है, तो टू कट द माई forfeiture, मैं तो वो पेनल्टी लेने के लिए तैयार कर रहा हूँ अपनी नाइफ को. Gratiano at this point says, not on thy soul but on thy soul, harsh Jew. वो कह रहा है ये पत्थर इतना सख्त नहीं है कि तुम इस पे सोल करो, इस सोल पे शार्पन करो अपनी नाइफ को. You should sharpen it on your own soul. तुम्हारी अपनी लाइफ, अपना हार्ट जो उस पे सोल करो, because that is even harder than this stone. Thou makest thy knife keen, but no metal can, no, not the hangman's axe, bear half the keenness of thy sharp envy. वो कह रहे हैं कि तुम इसको शार्प कर रहे हो, लेकिन इसके जितनी धार है उतनी, जितनी इसकी धार उतनी नहीं हो सकती जितनी तुम्हारी खुद की हेट्रेड की धार है. द शार्प हेट्रेड यू हैव, इवन द hangman's axe कैन नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ शार्पनेस उसकी एक्स में भी, जितना कि तुम्हारा हार्ड शार्प एनवी है, ये हेट्रेड है जो तुम्हारी को किसी भी जान देने के लिए वो कर रही है, क्या बोलते हैं, इंस्टिगेट कर रही है, प्रोवोक कर रही है. कैन नो प्रेयर्स दी, क्या कोई भी दुआएं, क्या है कोई भी रिक्वेस्ट तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचती कि यू शुड लिसन टू देम. Shylock so says, no, none that thou hast wit enough to make. वो कह रहे ऐसी तो कोई भी प्रेयर या रिक्वेस्ट मेरे दिल तक नहीं पहुंचती तो तुम बोल सको, बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कि तुम ऐसे शब्द, ऐसी बातें बोल सको जो मेरे दिल को छू सके या लग जाएं. Gratiano says, oh, be thou damned inexorable dog, and for thy life let justice be accused. Thou almost makest me waver in my faith to hold opinion with Pythagoras. वो कह रहा है कि you are a most inexorable dog. Why is he saying that? One who is not cannot be insulted and cursed enough. जिसके मतलब जितना भी बोलो वो कम है, उतनी बेइज्जती उसकी कम है. वो कह रहा है तुम्हारा जिंदा होना ही अपने आप में अक्यूज करता है जस्टिस को. तुम जैसे लोगों को तो पहले ही मार देना चाहिए, बट यू आर स्टिल अलाइव, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन द प्रॉपर जस्टिस. And because I see you, I start thinking that the opinion given by Pythagoras is very, very true and apt, because he gave this particular theory that all the men, they usually first they get into the take birth of various lives, and then afterwards the soul keeps on passing from one species to another, and finally it comes in the form of human. So unlike many other religions also have the same theory, here it is given by Pythagoras, that souls of animals infuse themselves into the trunks of men. इंसानों के अंदर भी कई बारी जानवरों की spirits, souls enter कर जाते हैं उनके जानवरों के मरने के बाद. And then he says, thy currish spirit governed a wolf who hanged for human slaughter. Even from the gallows did his fell soul fleet, and whilst thou layest in thy unhallowed dam, infused itself in thee. For thy desires are wolfish, bloody, starved and ravenous. वो कह रहा है ये ऐसा है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो एक डॉग लाइक स्पिरिट है, इट इज रूल्ड बाय और इट इज गवर्न्ड बाय अ वुल्फ,
and that wolf must have been punished for human slaughter. उस जमाने में कोई जानवर अगर किसी इंसान को मार देता था तो लाइक अ पब्लिक हैंगिंग, फांसी की तरह उस जानवर को अगर पकड़ लिया जाता था तो उसको पब्लिकली हैंग कर दिया जाता था. सो ही इज सेइंग कि वो वुल्फ ह्यूमन स्लॉटर के लिए हैंग किया गया होगा, एंड फ्रॉम देयर द स्पिरिट ऑफ दैट वुल्फ केम डाउन टू द गैलोज, एंड फ्रॉम देयर इट स्नीक्ड आउट, एंड एज इट वाज roaming around that spirit, it came into your mother's womb where you were being formed, and there when you were being formed, at that time that spirit went inside your body and it became your spirit, because you are someone who's bloodthirsty, who's starved for flesh and blood, and your desires are almost like a wolf, because here he's you can say asking for blood and flesh of Antonio. Shylock says, till thou canst rail the seal from off my bond, thou but offendest thy lung to speak so loud. Repair thy wit, good youth, or it will fall to cureless ruin. I stand here for law. Shylock is saying, जब तक तुम उस बॉन्ड में से वो सील को ना हटवा दो या इस सील को चेंज ना करवा दो, तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज तुम्हारी बातें जो है वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ तुम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपने आप को ही परेशान कर रहे हो. यू आर हर्टिंग योर ओन लंग्स. You need to improve your intelligence, your wit, so that it can affect me or it can make any change on my decision. It can bring any change to my decision. Otherwise, you are not making any difference to this particular scenario. And so I stand here for law still. वो अभी भी adamant है, वो कह रहा है अभी भी मुझे law चाहिए, proper penalty चाहिए. Duke says, this letter from Bellario doth commend a young and learned doctor to our court. Where is he? ये जो लेटर है ये हमारे को बता रहा है कि एक लर्नेड यंग डॉक्टर यहाँ आने वाला है, जल्दी बताइए वो कहाँ है. So Nerissa says, he attendeth here hard by to know your answer. वो यहीं पे हैं, बाहर खड़े हैं बिल्कुल नजदीक में ही, and he is standing there to know what is your answer, whether you will allow him inside or not, whether you will admit him. So Duke says, with all my heart, some 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place. Meanwhile the court shall hear Bellario's letter. वो कह रहे 2-4 लोग जाओ और very nicely escort that man, that young lawyer inside the court, and meanwhile we will see that what is written in the letter from Bellario, what is the content. So the clerk, that is Nerissa herself, she reads the letter. Your grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick, but in the instant that your messenger came in loving visitation was with me a young doctor of Rome, his name is Belshazzar. So he says कि my lord, जिस समय आपका मेरे को लेटर मिला, when your messenger came with your request letter to me, at that time I was being visited by another person, and that was a young doctor of Rome, and his name was Belshazzar. वो भी एक young lawyer था, वो मेरे को उस समय मिलने आया हुआ था, उसका नाम Belshazzar है. I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. We turned over many books together. He is furnished with my opinion, which bettered with his own learning, the greatness whereof I cannot enough commend, comes with him at my importunity to fill up your grace's request in my stead. वो कह रहा है उस टाइम पे मैंने उसको इस केस में जो ज्यू और एंटोनियो के बीच का डिस्प्यूट है, आई मेड हिम अक्वेंटेड, मैंने उसको इसकी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी, एंड व्हेन वी वर अक्वेंटेड विद दिस we both looked into various books, searched many books, and then my opinion is what he already knows, and that opinion was made even better by his own learning and by his own knowledge. And that is how we can say that वो जब आएगा वहाँ पे आपको पता चलेगा what nice and intelligent person he is, because I am sending him to fill my place instead of me. He will be there. I am sending him. Please do consider him. I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack a reverent estimation. आई रिक्वेस्ट यू कि उसकी कम उम्र आपको बिल्कुल भी ये सोचने पे ना करे कि इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ इक्वली वर्दी ऑफ दैट ऑल रिस्पेक्ट. फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विद सो ओल्ड अ हेड.
I leave him to your gracious acceptance, though whose trial shall better publish his condemnation. वो जो है, आज तक मैंने इतना कोई यंग लॉयर या यंग पर्सन नहीं देखा है who is so well aware of the things and who has so much of knowledge, so much of experience. उसकी कम उम्र को आप उससे कहीं से भी उसको कम मत समझिएगा. Accept him, and जब वो ट्रायल करेगा you will yourself understand कि वो जो है कितने ज़्यादा उसको मतलब कितना ज़्यादा he deserves all that respect and praise. Duke says, you hear the learned Valerio, what he writes, and here I take it is the doctor come. He says, this is what all is written in Dr. Belario's letter. I have read it in front of you. You all know it. And now I am taking this opportunity to follow what he has said. I'll request the other doctor, lawyer, to come inside. At this time, here on stage enters Portia, and she is also disguised as a man, as the doctor of law. And so Duke says, give me your hand. Come you from old Bellario? क्या तुम्हें Bellario ने भेजा है? Portia says, yes, my lord. Duke says, you are welcome. Take your place. Are you acquainted with the difference that holds this present question in the court? क्या आपको पता है कि ये जो dispute यहाँ कोर्ट में चल रहा है इसमें क्या है? सब चीजों के बारे में सही से पता है? Portia says, I am informed thoroughly of the cause. Which is the merchant here and which is the Jew? Duke says, Antonio, Shylock, both of you stand. And Portia says, is your name Shylock? Shylock says, yes. Portia asks, of a strange nature is the suit you follow, yet in such rule that the Venetian law cannot impugn you as you do proceed. तुम्हारा केस बहुत ही अलग टाइप का है, बहुत ही फर्क है, लेकिन फिर भी कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सब कुछ बहुत ही लीगली करा गया है, जिसमें वेनिशियन लॉ तुमको प्रोसीड करने से बिल्कुल भी रोक नहीं सकता है. Then she talks to Antonio. You stand within his danger, do you not? क्या तुम इस खतरे में हो कि अगर जो भी इसकी इच्छा होगी उसी पे तुम्हारा सारा जीवन डिपेंड करता है, ये सिचुएशन डिपेंड करती है. Do you realize that? Antonio says yes, he says so. Portia says, do you confess of the bond? क्या तुमने ये बॉन्ड साइन करी है? Antonio says yes, I did. Portia says, then must the Jew be merciful? तब तो Jew को merciful होना पड़ेगा अगर एंटोनियो को बचना है तो. Shylock says, on what compulsion must I? Tell me that. क्यों ऐसा जरूरी है कि मुझे मर्सी दिखानी पड़ेगी? क्या कंपल्शन है? प्लीज मुझे ये बताओ. Portia says, this is a very important mercy speech. She says, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. वो कह रहे क्वालिटी ऑफ मर्सी ऐसे किसी को फोर्स नहीं करी जा सकती है, वो तो एक जेंटल रेन की तरह है, हेवनली रेन जो कि हेवन से गिरती है विदाउट एनी distinguishing or differentiation towards any particular place जहाँ पे वो गिर रही है. And it is considered to be, mercy is considered to be twice blessed. Why? Because it blesses the one who shows mercy, and it is also a blessing for the one who is receiving the mercy. So both of them are blessed. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो एक माइटियर को और भी ज्यादा माइटी बना देती है. एंड एक थ्रोन्ड मोनार्क जो है वो एक उसकी क्वालिटी जो होती है मर्सी की, वो उसको और ज्यादा बेहतर बना देती है फॉर द क्राउन. बिकॉज नाउ पीपल लव हिम. दे डू नॉट लिसन टू हिम जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, बट दे लव एंड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ द लव एंड मर्सी दैट ही हैज फॉर हिज पीपल. His scepter shows the force of temporal power. उसकी earthly powers का symbol है उसका scepter, the rod that he holds for command. The attribute to awe and majesty, and उसके अगर वजह से लोग उसके सामने झुकते हैं तो that is all because of fear and awe of that earthly power. Wherein doth sit the dread and fear of the king, जहाँ पे उनके मनों में उसका डर बैठा होता है. But mercy is above this sceptered sway. It is enthroned in the hearts of the kings. लेकिन ये जो मर्सी है, दिस इज वेरी वेरी हायर एट्रीब्यूट, एक बहुत ही हाई लेवल की क्वालिटी है जो कि सीधे उस किंग के दिल में होती है, अगर उसके मन में होगी. इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. इट इज जस्ट लाइक गॉड. जस्टिस विद मर्सी इज समथिंग विच ओनली गॉड कैन शो, एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स. एंड सो यहाँ पर अगर वो किंग ये करता है तो वो एक में ऑलमोस्ट ही इज शोइंग और रिप्रेजेंटिंग द गॉडली कैरेक्टरिस्टिक. व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब मर्सी को वो जस्टिस में ले आता है अपने, तो ही बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड डज दैट. ही शोज जस्टिस बट विद प्रॉपर मर्सी. देयरफॉर Jew, though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. तुम प्रॉपर जस्टिस चाहते हो
लेकिन जीव इस बात का ध्यान रखो कि अगर प्रॉपर जस्टिस ईश्वर ने कर दिया, सो नन ऑफ अस वुड बी गेट सेल्वेशन, हमारा उद्धार, हम में से कोई भी बचाया नहीं जाएगा. वी ऑल विल बी डूम्ड बिकॉज वी आर ऑल sinners somewhere or the other. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. हम सब जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, when we all reach and pray to God, we ask for His forgiveness, for His mercy. So we should be doing the same thing in our own lives also to the deeds of mercy. I have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea, which if thou follow the strict court of Venice, must needs give sentence against the merchant there. ओके मैंने बहुत बोल लिया तुम्हारे को समझाने के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं समझते हो और तुम्हारे को तुम्हारा प्रॉपर जस्टिस चाहिए, देन इन फॉलोइंग दैट प्रॉपर जस्टिस दिस कोर्ट विल हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस पर्टिकुलर जजमेंट, दैट यू विल बी गिवन योर प्रॉपर पेनल्टी. नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दैट पेनल्टी. लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी होगा सब तुम्हारे ही सर पे होगा. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. शाइलॉक सेज, My deed upon my head, I crave the law, the penalty and forfeit of my bond. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सर पे डाल दो सब कुछ. I just want the proper penalty and proper bond. That's the only thing I care about. I do not care about any other thing. Nothing mercy, no God, no judgment, nothing. I just want my penalty. And that is the judgment, that is the request made by Shylock. We'll end this video over here. We have come midway. And in the next video we will be doing the second part of this particular scene, that will be act 1 from line 215 onwards. That is Portia's speech. So we'll end this video over here.